We will try 7th question. Any one of you would like to volunteer? फाइव भी बाकी है, पहले 5 कंप्लीट करते हैं. Any volunteer for 5th question? 3 moles of ideal gas kept at constant temperature 300 Kelvin are compressed from volume 4 liter to 1 liter. Work done is. एक तो ये तरीका होता है वर्क डन का, P डेल्टा V. यहाँ पे हमारे पास प्रेशर की जानकारी है क्या? नो सर. तो क्या करें? डेल्टा V है क्या? यस सर. यस. और दूसरा हमारे पास इक्वेशन ये होता है PV इज म्यू RT. तो कैन वी राइट P एज म्यू RT अपॉन V? यस सर. तो वो रखने से जो इक्वेशन आता है, क्या इससे P मिल जाएगा और Yes, फिर sir. वर्क डन हो जाएगा? समझ पड़े से बताने ट्राई करो यस प्लीज. सर. ट्राई इट दिस वे. mu equal to 3 mole. Then R equal to 8.314 joule per mole Kelvin. Temperature है 300 Kelvin. टू 2494.2. क्या? 2494.2. Volume is 4 liter, but 1 liter is 10 raised to minus 3 meter cube. ऐसा करके भी फाइंड कर लो. ट्राई करो प्लीज. टू 2.49. 1.87. 2.8 पास्कल. 1.87. सर हाँ, pressure. 1.87 पावर सर. 2.87 into 10 raised to ऐसा ना कि 10 raised to नेगेटिव पावर पॉजिटिव. करो सॉल्व. चलो. How many rounds are there? 80 plus. Okay. सर नहीं, चार तो कम. 1.87. हाँ बोलो. 1.87. सर 1.87 है जहाँ. 1.87. 1.87. 1.87. See, how can there be different answers? अगर सबका वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम आना चाहिए. एंड सर साथ में 1.87 पावर भी है ना. 2.87 into 10 raised to minus. सर 2 नहीं 1. सर 1.87 Sir, 10 raised to 3. ना 10 raised to 3 नहीं आया. 1.87 आया. 2.87 into 10 raised to what value in minus? चलो मैं ही फिर से सॉल्व कर देता हूँ. म्यू इक्वल टू 3 मोल. T equal to 300 Kelvin. V1 equal to 4 liter. V2 equal to 1 liter. And W equal to how much? W equal to P delta V.
and P equal to mu RT upon V1. So this is 3 into 8.314 into 300 upon 4 into 10 raised to minus 3. And that will give us pressure value. Sir, 1.87. So 1.87. So 18 point. So 1.87. 18 point. 18 नहीं sir, 1.87. Give me the value. Chat में लिखो. 10 पावर -3 कैसे होगा? -5 हो जाएगा. पावर कब से गलत दे रहे हो सब लोग? कब से? 1.87 into 10 raised to -6 Newton per meter square. ये चलेगा. ये absolutely fine. Now work done is equal to P delta V. So 1.87 into 10 raised to -6 into 4 minus 1 into 10 raised to -3, then it will be joule. ये तो नहीं आया आंसर. हाँ सर नहीं आता. अरे पावर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ऑप्शन है. आई एम सॉरी. हाँ सर, पॉजिटिव. हाँ +6 आवे ना. तो हो जाएगा. आंसर आ गया. देखो मल्टीप्लाई करो. 1.87 को 3 से मल्टीप्लाई करो. क्या आता है? 5.6. 5.61. सर तो अपन ना. तो नहीं आया आंसर. क्यों नहीं आया? ढूंढो ढूंढो. सर वॉल्यूम 1 ले आना तो. कुछ है? वॉल्यूम. What is the answer given? Yes. इसमें कुछ तो मिस्टेक हुई है. उसको रेक्टिफाई करते हैं समझ के. Anybody, any input from your side? बताओ. ये फिर मैं करूँगा. चलो पहले 7th और 10th करते, बाद में 5th पे जाएंगे. नॉट एन इशू. Latent heat of vaporization of water is 538 calorie per gram. And 1 ग्राम में 168 जूल वर्क हुआ. तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. ये तो बहुत ही सिंपल है. वर्क डन इज 168 जूल. इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है. दैट मींस डेल्टा क्यू मिल जाना चाहिए. एंड दैट इज गिवन 538 कैलोरी पर ग्राम into 1 gram. So answer is 538 calorie. So here delta Q is delta U plus delta W
Therefore, delta U is delta Q minus delta W. 538 minus 168. What is the answer? 370. 370 joule. Has option? Calorie, sir. B. Okay. B. સર કેલરી આવશે ને જૂલની જગ્યાએ. પેલું વર્ક ડન ને કેલરીમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે ને જૂલ થી. શું થયું? ડેલ્ટા એવું જૂલની જગ્યાએ કેલરી આવશે. સર Very ડિવાઇડેડ good. બાય So 4.186. somebody said correct. I'm very happy. જેણે બી કીધું બહુ સરસ કીધું. Excellent છે આ વસ્તુ. Yes. બોલો. સર ડિવાઇડેડ બાય 4.1862 કરવું પડશે ને. શું શું કરવાનું એ મને સમજ ના પડી. સર 168 ડિવાઇડેડ બાય 4.168 એવું કંઈક ડિવાઇડ કરવું પડશે તો વર્ક ડન જે છે એ કેલરીમાં આવશે. આટલી બધી મોટી મોટી વાતો નહીં કરવાની. સિમ્પલ એવું કહેવાનું ઇટ શુડ બી ઇન ધ સેમ યુનિટ. આ ના ચાલે. મોટી મોટી વાતો ના કરો. મેક ધ थिंग सिंपल. दिस इज इन जूल एंड दिस इन कैलोरी. ना चाले. ऑप्शंस किसमें है? कैलोरी में है. ऑप्शंस कैलोरी में है तो सारी यूनिट कैलोरी में होने चाहिए. तो ये 168 जूल है, उसका कैलोरी करना पड़ेगा. तो 1 कैलोरी कितना जूल? 4.168. 1 calorie is how many joule? સર તમારો અવાજ થોડો કપાય છે. સર તમારો અવાજ બરાબર નહીં. 1 calorie is how many joule? .186. You can take it as 4.2 joule. This is very important. So here it will be 168 40 કેલરી. by 4.2 calorie. Then solve it. So मेरे ख्याल से 40 आएगा. યસ સર એ જાવ. ये जाएगा ना? तो યસ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 40 होगा. 498 is the answer. 490. Perfect. And that will mean calorie. So this question, very important hint, take care of units. आज मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करे जेज में तुमने करीने बताया. सिमिलरली फिफ्थ में भी बाद में करेक्शन करते हैं. सेवंथ में जो सबसे कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की उतावड़ में यूनिट जो है नहीं. एक कैलोरी में एक जूल में सब्ट्रैक्शन कैसे मुमकिन है? Completed. સર તમારો અવાજ કપાય છે. Next. 10th. So 7th का आंसर आया हमारा 498 कैलोरी. अभी 10th का आंसर गामा is 1.5 and final volume is 1/4.
तो प्रेशर का रेशियो गामा इज 1.5, V2 is 1/4 V1. So V2 by V1 is 1/4. And the question asks is the ratio of final to initial pressure. So they want ratio P2 by P1 how much? Ratio P2 by P1 is how much? So start with the formula. P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma. So therefore, P2 by P1 is V1 by V2 raised to gamma. So V1 by V2 will be 4/1. Raised to gamma is 1.5, 1.5 is 3/2. So 4 is 2 square. So 2 square by 1 raised to 3/2. That will be 2 square into 3/2 by 1. So it will be 2 cube by 1. 8:1. So 8:1. So this will be the answer. Option D. एंड कंफ्यूजन अगर हो जाए 8:1 की 1:8 तो देखने का वॉल्यूम कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ. वॉल्यूम कम हुआ कि ज्यादा हुआ? अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो दैट मींस प्रेशर इंक्रीज होगा. सर હેલો बोलो સર. बोलो. સર સર તમે જે ડાયરેક્ટ આ રિલેશન છે ને P1 V1 રેસ ટુ ગામા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ P2 V2 રેસ ટુ ગામા, સર એ કાર્નોટ સાયકલ પ્રમાણે તમે લીધું, પણ સર એ આમ ડાયરેક્ટ ખબર કે ના પડી જાય, એક્સપ્લેન કરો. એવું નહીં, એડિયાબેટિક કોમ્પ્રેશન છે એટલે a gas for which gamma is 1.5. Now gamma is given, that means it's adiabatic process. Adiabatic process में ये रिलेशन होता है, इसलिए यूज करते हैं. हाँ हाँ, ओके ओके ओके. And Carnot cycle में it is consisting of 2 adiabatic and 2 isothermal stages. समझ पड़ी? हाँ सर, पड़ी गई. Okay. Write down this 10th, then we take 12th. तब तक 5 का भी हिंट किसी को मिला है तो बताओ मुझे. સર हाँ बोल बोल. સર ફિફ્થમાં વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થાય તો આપણે નેગેટિવ ટેન सो गई, नहीं समझ पड़ती. કરાવડો તમે લોકો વિચારજો, ના આવડે તો હું કરાવડો. I just want to give you time to think. Yes. Sure. Completed this question. Now 12. Yes, sir. Question. क्या है देखो. By what percentage should pressure of given mass be increased so as to decrease in volume by 10% at constant temperature? So constant temperature T and decrease in volume
સર ફિફ્થ નો કહું. Volume decreased by 10%. The question is pressure increased by what? Now here the relation is PV equal to constant. PV equal to constant, so P varies as 1 by V. So P2 by P1 is V1 by V2. P2 by P1 is V1 by V2. Now V2 is 10% decrease हुआ, so it is 0.9 V1. ये बात समझ में आई? डायरेक्टली नहीं लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, V2 equal to V1 minus 10 by 100 V1. So this will be V1 minus 0.10 V1. That is 0.90 V1. रखो. Now solve. P2 by P1 is V1 upon 0.90 V1. V1 cancel. 1 upon 0.90 क्या आता है? Solve करो. 1 upon 0.90 क्या आता है? 1.11. 1.11. શું આવે છે? 1.11. 1.111. 1. So we can say P2 equal to 1.111 P1. समझे सब लोग? और एक बार ये आंसर आ गया, P2 is 1.11 P1, फिर आपको चेंज फाइंड करना है, ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ. इट विल बी P2 equal to P1 plus 0.111 P1. 0.111, it is 11.1% increase in pressure. This is the answer. Write it down, please. Complete the writing work. No, sir. No. Sir. Hello, sir. बोलो. Sir, बोलो. last step તમે કહો ને P2 equals to P1 plus 0.111 P1. શું? Sir, last step તમે કરો ને P2 equals to P1 plus 0.11 P1. हाँ. Sir, એ શું કર્યું એ ખબર ના પડી. 1.111 છે એટલે P1 plus 0.111 થયું ને? હા. હા, okay. સર ફિફ્થ માટે બોલું? હા, હું કરોડો. સર મેં બોલું આન્સર? હે? મેં આન્સર બોલું? હા. સર આ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર છે તો આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ થઈ, તો પછી ડેલ્ટા Very ડબલ્યુ good. ઇક્વલ્સ ટુ ન્યુ આરટી ln Very good. V2 upon V1. Exactly. બસ આ જ પોઈન્ટ સમજવાનો હતો કે ઇટ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર. કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર એટલે આઇસોથર્મલ ની ઇક્વેશન આવે.
Yes. So let us now solve fifth, जो बाकी रह गया है हमारा. चलो अभी फिफ्थ क्वेश्चन. 3 mole, so mu equal to 3, T equal to 300, and it is constant. That is the important hint, constant. Then volume, V1 equal to 4 liter, V2 equal to 1 liter, and work done how much? So here the formula will be W equal to mu RT ln V2 by V1. ये work done का formula लगेगा. So this will be mu का value 3, R का value 8.314, into T का value 300, and then natural log of V2 by V1. So it is 1/4. और क्योंकि रेशियो में है तो कन्वर्ट नहीं करेंगे तो चलेगा. तो आटलो आपने सॉल्व करवानो. ये इतना मल्टीप्लाई करो 900 into 8.314 करो. 7482.6. 78 7482.6. કેમ અવાજ આટલો ખરાબ આવે તમારા લોકોનો? યસ સર તમારા નેટવર્ક લો લાગે છે. નેટવર્કમાં ઇશ્યુ છે એવું છે? સર તમારો વિડિયો પણ ચોટી જાય છે. સર રેડ ટાવર બતાવે છે તમારા નામની આગળ. What is the value that you are getting? હું બી ડિવાઇસ ચેન્જ કરી આપું. ચલો તમે 7482.6. 7482.6 7482.6 and ln है into 2.303 log 1/4. 2.303 मल्टीप्लाई करते तो नेचुरल लॉग में से कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाता है. So this will be करो मल्टीप्लाई, and log of 1/4 will be 17,232.2 17232.42. Sir, 17232 so 17232.42. एक मिनट बराबर. लेट मी मेक द थिंग सिंपल फॉर यू. एक हिंट आपको देता हूँ, उससे सॉल्व करते वो अच्छा है. पे अटेंशन. Remember one important point. This will be a better hint for you. Natural log of 2 is 0.693. You remember this. Natural log of 2 is 0.693. अब यहाँ पे क्या है? 1/4 है. So क्या करें? So this can be written as जो हमारा वैल्यू था वही. So it will be 3 into 8.314 into 300 into ln of 2 raised to minus 2. क्योंकि 1/4 will be 4 is 2 square. So 1/4 is 1 upon 2 square. So 2 raised to minus 2. ये सबको समझ में आया? Yes. Yes or no? Yes, sir. और ये उसके Yes, सर पे sir. जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो Yes, जाएगा. sir.
So this will be -2 into 3 into 8.314 into 300 into ln2. बट ln2 का वैल्यू क्या रखेंगे? 0.693. रखो, सॉल्व करो. ये वो 7400 जो हमने मल्टीप्लाई करके रखा था, और ये 1.38 माइनस में आएगा. मेरे ख्याल से फर्स्ट आंसर आ जाएगा. कुछ मुश्किल नहीं होता है, खाली करेक्ट अप्रोच याद करना होता है. -10,370. आएगा ना? 0.88. This completes the 4 questions on first page. Now we do the other questions. सर एक मिनट 5 नंबर पेज करें अकाउंट से. आंसर. Completed? Yes, sir. Sure. Now 14. V equal to KT raised to 2 by 3. Mu equal to 1 mole. Delta T equal to 60 K. Work done how much? कैसे सॉल्व करेंगे, कोई हिंट देगा? Anybody?
So work done is pressure into delta V. So work done pressure into delta V current solve करसो. So pressure ने value find करसो અને પછી work done find કરसो. શું કરી બોલો? So pressure ने value find કરसो પછી pressure ની value જે મળશે એને delta V થી multiply કરીને work done મળી જશે. આમાં ઇન્ટિગ્રેશન યુઝ થશે, હિન્ટ આપું ચલો તમને. યસ. यस. पहले मैंने जितना स्क्रीन पर लिखा समझ में आया सबको? यस सर. हाँ सर खबर पड़ी गई. लेट अस रिवाइज इट. चलो ફરીથી ક્રોસ ચેક કરું પછી આગળ વધું. ये स्टेप क्लियर? ये यस सर. स्टेप क्लियर? यहाँ Yes, तक sir. यहाँ तक क्लियर? यस सर. हाँ यस सर सर. क्लियर. अभी इसको सॉल्व करना है हमें. v is k t raised to 2/3 इसको सॉल्व करना है. तो कैन वी राइट देयरफॉर dv इक्वल टू k t raised to 2/3 है. 2/3 then t raised to 2/3 minus 1 and then it will be dt. ये समझे? यस सर. Yes sir. सर एक बार डेरिवेटिव तो अभी इसको हाँ डेरिवेटिव ले दो, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. यस. तो क्या हो गया? रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? So we will get dv delta t ની વેલ્યુ મળી ગઈ. 2/3 k by t dt raised equal to to -1/3. k into 2/3 into t raised to -1/3 એવું થઈ ગયું ને? यस हाँ सर. हाँ सर. yes or no? यस सर. यस सर. नाउ इसमें k है, सो रख दो. पुट k इक्वल टू यहां से k इक्वल टू v अपॉन t रेज टू 2/3. तो देखो अब क्या होता है. सो dv by dt विल बी क्या होता है?
चलो हिंट दो अभी. So You are very minus close to the answer. -1. ये t raised to -1/3 यानी 1/3 यानी 2/3 दोनों ज्वाइन हो गए तो t हो गया ना. हाँ So we'll get simply dv by dt equal to 2v/3t. yes अब sir. समझे? Yes sir. dv by dt is 2v/3t. अब सेपरेटिंग वेरिएबल करना है. So can I write dv by v is dt by 3t, 2 dt by 3t. Yes sir. सर देखा तो नहीं है पेन हाँ में. तो कर. So देखा तो नहीं सर. દેખાય છે સર. સર દેખાય છે સર. હવે આપ પેલી ઇક્વેશનમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરશું dv by v માં. अभी हमारे पास ये फॉर्मूला था उसमें dv by v है और ये dv by v आ गया है. So can I now write w equal to integration rt into 2 by 3t dt. Right? कंप्लीट करो. सर समझ गए सब लोग? Yes sir. We are very close to the answer now. अभी इसमें टी कैंसिल हो जाएगा. राइट फ्रॉम बिगिनिंग एक बार क्रॉस चेक करके बाकी का मैं रिमूव कर देता हूँ. मुझे कंफर्म करो ये सब स्टूडेंट्स. यस, फर्स्ट स्टेप समझ पड़े छे? यस सर. Yes. ये फर्स्ट स्टेप क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, यहाँ तक सब कुछ. हाँ Yes सर sir. क्लियर. આટલું આખું રિમૂવ થાય? સર લાસ્ટ સ્ટેપ લખવાનું બાકી. ये ऐसे न्यूमेरिकल मोस्टली होते नहीं है बट ये कभी है तो सीखना अच्छा है. नाउ सी व्हाट हैपेंस. सर बोलो. सर सर हाँ ये टी कैंसिल हो जाएगा. t raised to 2/3 ये कहीं को सर एक खबर ना So it will be w equal to integration 2r/3 dt. फिर इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो it will be 2r/3 constant and integration of dt. So it will be 2r/3 into t સર ડેલ્ટા ટી આવી જશે ને? with limits t2 to t1. So this will be 2r/3 into t2 minus t1, that is delta t. So w equal to 2r/3 times delta t. And हमारे पास delta t directly है. So it is 2r/3 and delta t कितना है? 60. 60. So w will be 40r. ऐसा ऑप्शन यस. ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो गया. जैसे स्टार्टिंग में हुआ था ना थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन में, एवा क्वेश्चन आवे ना तो एक बार ट्राई करो, ना आवे तो कीप इट असाइड एंड गो विद द अदर क्वेश्चन व्हिच यू नो. देन लास्ट में जाके फिर वो क्वेश्चन करना. स्टक अप नहीं हो जाने का क्वेश्चन पे कभी भी.
સર બોલો. સર આ v upon t raised to 2/3 અને એ વાળો સ્ટેપ છે ને એમાંથી સર t કઈ ખબર ના પડી t raised to 2/3 કઈ હોય. I'm not able to understand your question. Can you repeat it, please, or somebody else can repeat it who has understood? હેલો સર. ये तो सर તમને ખ્યાલ હોય તો હા. સર આ જે સ્ટેપ છે ને v upon t raised to 2/3 વાળો dv by dt equals to v upon t raised to 2. સર એ ખબર ના પડી એના પછીનો જે લખે તમે ડાયરેક્ટ t એ ખબર ના પડી. જો આ સ્ટેપ સમજ પડી ગઈ? સર Have you understood this step? યસ સર. Then this, યસ સર. then this, યસ સર. then this. યસ સર. Then integration of dt is t. So limits t1 to t2. That means temperature था तो we are considering limits t1 to t2. आओ पहले दिन लखवा नहीं होय, which we have not written. ઓકે સર. Have you understood? યસ સર અંડરસ્ટુડ. Shall we move on to the next question? Yes, sir. યસ સર. सबकी नोटबुक में ये लिखा हुआ चाहिए, स्कूल में चेक करेंगे मंडे को नोटबुक सब. Yes, sir. Yes. પછી એવું નથી કે मैं नतु लखूं. ये सारे मैं जो मेथड करवा रहा हूँ सब नोटबुक में चाहिए मुझे प्रॉपर. अभी नहीं लिखा तो कल टाइम निकाल के लिख लेना. अंजलि को एब्सेंट है, अपनी भी नोट्स कंप्लीट हुई. मंडे को सबका ये मैं नोट चेक कराऊंगा. यस. 16th question. नेक्स्ट इज 16th. 16. ओके. सिक्सटीन क्वेश्चन में gamma is 1.4 is given. P equal to 2 atmosphere is also given. Is compressed adiabatically to so that its temperature rises from 27 to 927. So it's a question of adiabatic compression. T1 equal to 273 plus 27. That is 300 Kelvin. And T2 equal to 273 plus 927. That is equal to 1200 Kelvin. So the pressure in the final state is, so P equal to how much? So P2 पूछा है. This is P1. अब ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमको पीटी रिलेशन चाहिए. नॉर्मली हम लोग लिखते हैं पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट, पर यहाँ पे टी वाला चाहिए. वी इज म्यू आर टी अपॉन पी. तो वो रिलेशन क्या था याद करो. ऐसा कुछ था. P1 रेज माइनस गामा इंटू टी गामा इक्वल टू कांस्टेंट. है सर रिलेशन? क्रॉस चेक Yes, करो. sir. बराबर Yes, है sir. ये. है बराबर. Yes, sir. ये इसके बाद वाला स्टेप समझे ये दोनों. Yes, sir. पढ़ी गई. Yes, students, write down this, then we proceed further.
Now put the value. I can even make the thing simple for you. इस तरह से करने से थोड़ा कंफ्यूज हो जाने की चांस है. लेट मी मेक द थिंग सिंपल फॉर यू. हमको प्रेशर फाइंड करना है ना. इट कैन बी सिंप्लीफाइड. So take it this way. P proportional to e raised to gamma upon gamma minus. एक्चुअली इसको ऐसा बोलते हैं, मैं बताता हूँ. Take gamma minus 1th root. Take gamma minus 1th root. It will be P will be proportional to t raised to gamma upon gamma minus 1. That will make the calculation much easy. अब वैल्यू रखो. So it will be P2 by P1 equal to T2 by T1 and gamma 1.4 minus 1. So therefore P2 by P1 will be equal to 1200 by 19, 1200 by 300 and 1.4 upon 0.4. So 14 upon 4. So 7 upon 2. Up 1200 upon 300 will be 4 by 1. So we'll get P2 by P1 is 4 by 1 raised to 7 by 2. So this can be further simplified as this is 2 square upon 1 raised to 7 by 2. That will be 2 raised to 7 upon 1, which will be 2 raised to 7. 2 square is 4. 2 raised to 3 is 8. 2 raised to 4 is 16. 2 raised to 5 is 32. 2 raised to 6 is 64. 2 raised to 7 is 128. So we'll get P2 upon P1 is 128 upon 1. So P2 will be 128 P1. So it is 128 into P1 is 2 atmosphere. So answer will be 256 atmosphere. This will be easier for solving. सर ऑप्शन सी. ऐसे भी आंसर आता है, उसमें ज्यादा स्टेप हो जाता. सर करो कंप्लीट, राइट इट डाउन. अभी कितने क्वेश्चन बाकी है? સર 1920 હજુ બાકી છે અને પછી 1920 છેલ્લા બાકી છે. સર करो क्वेश्चन 16. હા સર, બે બાકી છે સર. સર 20. हाँ बोलो. સર તમે આ 4/1 ઓર રેઝ ટુ 7/2 ને જે સોલ્વ કર્યું ને સર એ પાછું સમજાવો ને. 1.4 upon 1.4 minus 1. So it will be 1.4 upon 0.4. 1.4 upon 0.4 यानी क्या? 14 upon 4.
14/4 यानी 7/2. Yes, sir. फिर 4 यानी 2 square and 2 square raised to 7/2. तो 2 and 1/2 will get cancelled, so it will be 2 raised to 7. अब समझ पड़ेगा? हाँ, okay, yes, sir. Done, sir. बोलो. Done, sir. Sir, done. Okay, very good. If you completed it, then we move on to the next question. Sequence में जो बाकी है वो ले लेते हैं. 16 हो गया. 19. Now 19. 10 mole of gas, 8 atmosphere to 4 atmosphere. Isothermal expansion at 20 degree. The amount of heat absorbed पूछा है. So mu equal to 10. P1 equal to 8 atmosphere. P2 equal to 4 atmosphere. T equal to 273 plus 27. That is equal to 300 Kelvin. And question पूछा है amount of heat absorbed. And is isothermal expansion. So isothermal है यानी temperature constant है. So delta T is 0. So delta U is 0. So delta Q will be delta W. Delta Q will be delta W. So that will be mu RT ln V2 by V1. Mu RT ln V2 by V1. But यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन नहीं है. हमारे पास जो जानकारी है उसमें प्रेशर का है. नॉट एन इश्यू. क्या करें? कोई तरीका है? यस. कैसे? So use relation PV raised to gamma is constant. So P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma. So we can now write P1 by P2 is V2 by V1 raised to gamma. अरे एडियाबेटिक का आइसोथर्मल है. ये तो आइसोथर्मल है. तो खाली हाँ आइसोथर्मल है. तो फिर तो और सिंपल हो गया. मस्त. एडियाबेटिक है ही नहीं. So P1 V1 is P2 V2. Simple. So P1 by P2 is V2 by V1. बात खत्म. रख दो यहाँ पे.
So our equation would be delta Q equal to delta W equal to mu RT ln P1 by P2. P2 by 1 करेगा P1 by P2. Put all the values. Mu का वैल्यू 10, R का वैल्यू 8.314, T का वैल्यू 300, ln का फिर P1 by P2. So 8 by 4. So this will be, ये तो पहले था ऐसा ही है, and it will be 10 into 8.314 into 300 into natural log of 2. ये तो आप जानते ही हो, मैंने आपको हिंट दिया था. ln2 is 0.693. So solve करो, आंसर लेके आओ. That will be in joule. But देखो ध्यान से देखो, ऑप्शंस जूल में नहीं है. ऑप्शंस किस में है? R. ऑप्शंस आर में है. उतावड़ नहीं करवानी. ये एक कॉमन एक अप्रोच है. एक बार सॉल्व कर ले, बीजी बार यूज करना चाहिए. नहीं, क्वेश्चन ना ऑप्शन पहले जुआना. सो यहाँ पे आर को रिटेन करना है. सो आर को सॉल्व मत करो. 2079 R. हाँ, 2079 300 into 0.7 यानी 210 से छोटा कुछ आर का वैल्यू आएगा. 2079 R. हाँ, 2079 R. That will be the answer. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Now, write it down, then we move on to the next question. इस वीक में आई थिंक बायो ग्रुप में रवि सर के सेशन आए होंगे. नेक्स्ट वीक में वो मैथ्स ग्रुप में आ जाएंगे. दोनों में वो पैरेलल हो जाएंगे. उसमें भी ये 12 चैप्टर वाले क्वेश्चन आएंगे कुछ ऐसे ही. ये प्रैक्टिस गणित सरस थी जैसे तुम्हारी. 11 उसमें खत्म हो गया है. 12 आधा ज्यादा खत्म हो गया है. What is the status? मैथ्स ग्रुप? Yes, sir. રવિ સર કરાવે તો આવડે, સમજ પડે છે ને? હા સર, 11 ચેપ્ટર અડધું થયું છે. નેક્સ્ટ વીક માં પણ આવી જશે આખું. ઓકે સર. સર બોલો સર, તમે હમણાં બોલે રિપીટ કરો ને ફરીથી. શું? હમણાં તમે જે બોલે ને એ ફરી રિપીટ કરો ને. કશો નથી બોલ્યો. હેલો, હા શું છે? હા ના, ભલે. Completed? Yes. No, sir. See, same question we can ask in test, but उस वक्त R का वैल्यू रख देंगे तो 2079 R ना आवे. પછી 2079 into 8.314 એટલે 16,000 17,000 જેવો આન્સર થઈ જશે. સિમિલરલી પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચન માં था અમારા એવી રીતે. આની પહેલા જે ક્વેશ્ચન ના કર્યો થર્ડ આપણે, સોરી ફિફ્થ ક્વેશ્ચન, એમાં -10368 જૂલ હતું. ધેટ વી કેન આસ્ક इन फॉर्म ऑफ R. कुछ समझ में आ रहा है?
अंडरस्टैंडिंग इज sir. वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। पड़ेगी समझ सर। थर्ड एंड फिफ्थ एंड 19th आर सिमिलर। Now 20. Volume of ideal gas increased by 24% during adiabatic process, so pressure will decrease by, and gamma is 5/3. Gamma is 5/3. Adiabatic process, volume increases by 24%. So V2 by V1 is 124/100. प्रेशर का क्या होगा? So method of solving this. हाँ बोलो। Sir, P1 V1 raised to gamma is equals to P2 V2 raised to gamma. P1 V1 raised to gamma is P2 V2 raised to gamma. Yes. So P2 by P1 will be V1 by V2 raised to gamma. तो कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इस मेथड में कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर हम दूसरी मेथड भी ट्राई करेंगे। करो ट्राई आगे। आवड़े છે આમાં તેને કરતા બીજી મેથડ કરાવો। सर आपकी मेथड we कराओ। go to other method. So सर आपकी मेथड कराओ। क्योंकि लॉग वाला कैलकुलेशन आएगा जबरदस्त। हाँ सर। बोलो। इसको सॉल्व करो। 100/124 क्या आता है? 100/124 क्या आता है? 0.80 0.80 थोड़ा વધારે है, क्योंकि 100/125 होता है ना, 06 वो एग्जैक्ट 0.8 आता है। तो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा। 0.8064 डजंट मैटर। चलो 0.8 ले लिया तो भी रेस टू 5/3। 0.8 रेस टू 5/3। दिस इज P2 by P1। अब आगे सॉल्व करना है। तो नेचुरल लॉग लेके करना पड़ता है। ये थोड़ा लॉग वाला मेथड होगा, बट नो ऑप्शन। इस मेथड से जाना है तो लॉग लेना ही पड़ेगा। सो log P2 by P1 will be log of 0.8 raised to 5/3. So it is 5/3 times log of 0.8. 5/3 times log of 0.8। और फिर इसको log 0.8 देखो। यस, स्कूल में सिखाया था लॉग देखना। Yes, sir. हाँ टेक सर। लॉग ऑन बोथ साइड्स। यस, सो इट विल बी 5/3 into 0.8 का लॉग माइनस 0. कुछ आएगा। एट का लॉग देखो।
0.09. Yes. Om Venejanam. Yes, sir. मंथन. यस सर। ऋषि, आया कुछ आंसर? लॉग दिखा आपने? 8 का 0.9031 होता है, ऐसा मुझे कुछ याद है, वही आएगा। मल्टीप्लाई करो। सर -0.15 આવે છે. શું આવ્યું? 0.15 આવે છે. -0.15. 15. बराबर। ये है log ऑफ P2 by P1। हमको चाहिए P2 by P1, तो टेक एंटी लॉग, that will be P2 by P1 will be P2 by P1 would be anti log of -0.150, that will be 0.7, roughly 0.7 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P2 is 0.7 P1, so we can write P2 is P1 minus 0.3 P1, so this can be written as P1 minus finally we can say 30% decrease। इतने ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, इसलिए कल बाकी रखे थे सिलेक्टिवली, सब टिपिकल क्वेश्चंस, एंड इतने अच्छे हैं कि आप दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट यू फॉरगेट इट। यस प्लीज। सर एक मिनट आप
You done? So completed all the questions. Cross check कर लो और कोई डाउट है तो पूछो. Yes. Yes, please. So all questions over. Yes, sir. Kindly cross check. हाँ. हाँ सर, खत्म कोई भी नहीं है। क्वेश्चन बोलो बोलो. कोई पण क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो. Confirm? Clear? Yes, Then sir. chapter numericals sir. are over, theory is over. कदाच sorry numerical कदाच थोड़ा बाकी है तो we'll complete it in the next class. But at least आज जो हमारा MCQ है वो भी numerical जैसे ही है. So Monday we'll start with a new chapter. And then some time will be devoted to complete the remaining numericals, whatever they are. Fine? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Your notes should be complete on Monday. Submit करना भूलना Completed, नहीं. sir. Okay, sir. That's great. That's great. Okay. I'm